बात खिलाड़ी के साथ मैं हूं सुप्रिया और इस शो पर एक खास बात यह है कि यहाँ पर केवल दिल की बातें होती हैं। दिल की बात यानी कि खुल के बात करते हैं। मेरे साथ हैं आज प्रवीण थिपसे, जो कि हम सभी जानते हैं कि एक इंडियन चेस प्लेयर रहे हैं, जो पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको ग्रैंड मास्टर नाम से नवाजा गया था और पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप जीती थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण। धन्यवाद। नाइस कमिंग टू योर शो। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा रहा है ये सफर, ये घोड़े, ये प्यादे, ये वजीर, ये राजा, ये रानी और ये ऊंट और ये हाथी, इनके बीच पूरी जिंदगी, मतलब कैसा कैसा पैशन है ये। नहीं, काफी अम्यूजिंग ये जर्नी रहा, क्योंकि अभी अगर देखते हैं तो जब समय मिले तो चेस खेलना, अगर कोई एंजॉय ना करे तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं रहता। और दैट्स द रीजन व्हाई आई एम स्टिल एक्टिव एंड आई एम इन ट्रेनिंग एंड आई एम चेयरमैन ऑफ ट्रेनर्स कमीशन। But all been a very interesting journey and very exciting even today. आज भी अगर कोई गेम खेला जाता है तो हम एंड सम ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स एंड माय वाइफ भाग्यश्री, हम लोग चर्चा करते हैं, अरे क्या क्या अच्छा मुंह खिला गया है। सो आई थिंक दैट पैशन हैज kept me all along enjoying this game every second or every moment of what I spend on chess. And of course, I make good friends, and that's also a great thing about sport, that you always make good friends. You people whom you otherwise would never have met, particularly abroad. So बहुत ही अच्छा जर्नी रहा, and every bit of it is enjoyable. ग्रेट सर। सर, ये जो फ्रेंड्स की बात आपने करी तो एक क्यूरोसिटी आई मन में जानने की आपसे कि इसी इसी स्पोर्ट के जरिए आपने किस किस चेस ग्रैंड मास्टर या चेस प्लेयर को अपना मित्र बनाया है। Well, सबसे बड़ी तो बात है कि विश्वनाथन आनंद से पहचान ही नहीं होती, क्योंकि when विश्वनाथन आनंद was very young, 10-11 years, तभी I am 10 years elder to him. So I've seen him since. मैंने ये निकलवाने के लिए ही आपसे ये सवाल पूछा है। Yes, so no, knowing Vishwanathan Anand as a child and even today, like we met a few months back, तो ये बहुत ही interesting होता है to study his personality and his styles. He has been one of the most prominent friends. But apart from that, others also, I would say not necessarily chess players, but chess players में भी काफी बड़े-बड़े खिलाड़ी जो है. But I won't restrict it to chess players alone. क्योंकि हम जाते हैं कि अर्जुन अवार्डीज के मीटिंग्स में जाते हैं, अलग अलग गेम्स के अलग अलग प्लेयर्स मिलते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे मतलब ग्रेट प्लेयर भी हाल ही में मेरी कॉम जी से मेरी मुलाकात हुई थी, और कोई ना कोई ऐसे मिलते ही रहते हैं अर्जुन अवार्डीज, जैसे जोकिम कार्बोलो, वंदना राव है, अमी घिया है, काफी अच्छे फ्रेंड्स जो हो गए। एंड दे आर नॉट फ्रेंड्स फॉर नाउ, दे आर फ्रेंड्स फॉर डिकेड्स, आई मस्ट से। And Neeraj Bajaj ji, for example, Neeraj Bajaj, I met him in 1977, and we all haven't lost contact. So there's wonderful elite sports persons from all over. Cricketers also great cricketers, of course. Sachin, I saw Sachin and Virat Kamble. I saw them come by auto in 1987. So and Gavaskar, Ajit Wadekar, so many. I mean, from different generations, we just come across great players, and those who are playing actively, those who have stopped. Deepa Karmakar, when Deepa Karmakar, when she published her book, she had invited me as to the function. So some of the things where you really discuss a lot of things about society, about sports, and about each other, and we really make long-term friends. And it's always like we have any information or anything that can be useful to other, we just share it. Otherwise, we are out of touch in general. But if there's anything that can benefit somebody else, then of course we interact with each other, and that's a great moment. And we meet at functions, and every day becomes very enjoyable when you think of those great moments. तो व्हाट अबाउट द व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स? तो एक ग्रुप बना हुआ होगा आप लोगों का जिसमें फॉरवर्ड्स होते होंगे। किस टाइप के फॉरवर्ड्स करते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे? Well, काफी ग्रुप्स है हमारे, वैसे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, but the condition is that you should be a friend for at least 40 years. So many of the ओह। friends are not able to join that. But काफी हमारे ग्रुप्स होते हैं, and we find something really amusing and amazing, then we really post it. Otherwise, so delete puzzles or ये नहीं होता है. But chess में, so like for example, today itself I posted a post where Vishwanathan Anand is still India #1. That's for the rating list. Today's rating list has come. So I just posted in the groups that Vishwanathan Anand is still India #1 since July '87 when he overtook me. I mean, he has been not #1 for on one or two occasions, but yes, so that's, I think we immediately exchange anything that's regarding the news or the World Championship games.
when the world championship was going Hmm. on, we just discuss positions with diagrams, and it's, and also we go back to हमारे पहले, अरे क्या खेलता है तू, वो that is still there among us, कि क्या खेलता था, अभी सुधरेगा नहीं, 40 साल पहले भी ऐसे ही खेलता था. So that spirit we have, Okay. and that are, I think, the wonderful moments. So I have a small query that Pragananda took over. I mean, he leapfrogged, Vishy sir. Abhi recently, he was India number one. So Now like, they made a concept of live rating. पहले क्या था कि every 3 months the rating used to be calculated. Initially it was every 6 months. So you okay, perform, and आप जो tournament खेलते हैं, everything is counted at the end of the 6 months, and your rating comes, which will be there for next 6. बाद में जी, change हो गया 3 महीने. Now the rating comes every month, but which is the correct rating. It's a published rating. But there is something hmm, like online rating. जैसे आज ही आपने कुछ गेम खेला और आप हार गए, so the mathematical calculation with the help of computer is possible, and immediately वो display हो जाता है, live rating is, today's live rating is so and so. But it's not taken for okay, any specific purposes. But yes, तो कभी अगर प्रज्ञान ने बहुत अच्छा गेम खेला, तो उनके अभी जैसे उनके पॉइंट में एक ही पॉइंट का फर्क है. आनंद इज अच्छा, 2748 एंड उनका 2747 है. तो आज अगर वो प्रज्ञान कार्लसन को हरा देते तो उनकी रेटिंग 2 या 3 पॉइंट बढ़ जाएगी, तो आनंद के आगे चले जाएंगे. But if he doesn't sustain it till 1st of March, then he will not be number one. He will be number one for the this uncertain period. Basically, daily it can change. But हम जो मानते ओहो, हैं टाइटल्स या किसी की चीज के लिए, वो होता है द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. तो आज मतलब हम देखेंगे प्रगणन हैड ओवरटेकन आनंद, but again Anand, he's back to just a point behind, and I think we can expect him to cross. But yes, it's still wonderful so things to see. basically there is a taraju going on, Ananda and Pragananda, Ananda and Pragananda. It is like this. Well, I won't say that, because Anand is no longer playing. So Yeah, Anand has no chance of increasing. So Anand has left a target. So naturally, yeah, it's easier for others to catch that target, but it's not what Anand had lifetime high. So Anand ka lifetime high, I think that title will be the great if some Indian is able to do that. And I see that our youngsters, particularly teenagers, are in a position hmm, to do that given time, because one needs to mature. And already the players of 17 and 18 years, Pragyanan and Gukesh, are shown such fantastic maturity that I'm expecting a world champion perhaps this year or 2026 or 2028 among this crop. And obviously, it's not going to be Anand, because Anand is not playing any longer. But we're going to see a second Indian winning the world championship soon, I think. तो हु नोज बेटर देन यू. आपके इतने सारे राइटअप्स मैं पढ़ती रहती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे छपते रहते हैं. आप इतना ज्यादा चेस में एक होते हैं कि आप चेस कोच करने लगते हैं, पर आपने ये फील्ड चुनी है लिखने की. तो किस चीज ने आपको इंस्टिगेट करा कि मैं लिखूंगा चेस के बारे में? इनफैक्ट ऐसे हो गया कि व्हेन आई वन द कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, उसके पहले मैं एशियन, आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ कॉन्टिनेंटल मेडल आल्सो. 1977 में मुझे वर्ल्ड जूनियर में, एशियन जूनियर में मुझे ब्रॉन्ज मिला था. तो बिफोर दैट नो इंडियन हैड वन अ मेडल इन एनी कॉन्टिनेंटल इवेंट, एंड कॉमनवेल्थ में हो गया. तो आफ्टर आई केम बैक, 2-3 दिन के बाद न्यूज आई थी, बिकॉज व्हेन आई केम बैक एंड पीपल इंटरव्यूड मी, तो दे एक्सप्रेस्ड सॉर्ट ऑफ कि आप वहाँ कॉमनवेल्थ चैंपियन हो गए, इंडिया में किसी को पता नहीं था. प्रिंट मीडिया बेसिकली एट दैट टाइम. तो उन्होंने कहा कि हम्म, कैन यू हेल्प अस आउट. सर से इन व्हाट वे. तो आप कुछ छोटा सा रिपोर्ट बना के भेजेंगे. समटाइम्स यूएनए एंड पीटीआई दे रिक्वेस्टेड मी इनिशियली. सो आई सेड ड्यूरिंग माय टूर्नामेंट, बट देयर यूज्ड टू बी ओनली वन राउंड अ डे. तो एक दिन होने के बाद हम कर सकते थे. देयर वाज अ टेलेक्स एट दैट टाइम, नो फैक्स डिडंट कम बिफोर या, 1988. सो उसके पहले फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था. तो आई यूज्ड टू सेंड अ ब्रीफ सॉर्ट ऑफ अ नोट ऑफ व्हाट इंडियंस डिड. एंड देन लास्ट डे फिर वो बनाते थे कि कौन सा रशिया का प्लेयर फर्स्ट आया, इंडियन प्लेयर्स कहाँ पे आए, एंड दैट सॉर्ट ऑफ. तो ये थोड़ा सा हैबिट हो गया. And then the newspaper started approaching, and one of the important things was Sundar Ramanji, the sports editor of Times of India. He approached हम्म, me, and he asked me to write a column from there. And I wrote a column for Times of India for 20 years. It's every Sunday, 1991 to 2010, till they stopped that page itself. So थोड़ा सा इतना ये हो गया कि लिखने में अगर लिखना है तो आपको भी पसंद आना चाहिए. See, initially it was more or less like a news bulletin giving information to PTI UNI. But then एक बार जी, अमर उजाला ने कहा था कि आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में आप लिख सकेंगे, मतलब हिंदी में मैं बात कर सकूंगा, आप उसको रिकॉर्ड करके
लिख दीजिएगा. So that is how it worked also. The World Championships also, Amar Ujala I covered, and many other papers also, including even Aftab Hindi also I have covered. Many UP papers, Rajasthan Patrika, Telegraph, and many other Times of India. Last year I covered the World Championship for Indian Express. तो बहुत मजा आता है जब वो कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता मूव देख के भी, तो आपको ये बताना पड़ेगा हमें. इन दैट केस व्हाट हैपन, दे नीड अ एक्सपर्ट. लाइक क्रिकेट का तो आप या हम कह सकते हैं कि अच्छा बॉल था या अच्छा हम्म. शॉट था, ऑल्दो देयर आर एक्सपर्ट देयर, बट कॉमन मैन कैन अप्रिशिएट. लेकिन चेस में तो कॉमन मैन हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो वो कहते हैं, तो हमें न्यूज नहीं मिलती है और हम ये नहीं कह पाते, हम क्या कहेंगे प्रोग्राम ने हराया, बस आगे क्या हुआ गेम में हम कैसे पता चलेगा. So that is the reason I came into, and I started enjoying it. I liked it because I got some people saying that okay, we learned a lot about the game and this particular game, including chess players. They said we hadn't known the intricacies of this particular game. तो हमें अच्छा लगा आपके notes लिख के. So that is how it started, and now it has become a passion. I mean, even if it's not published, I send it to students. Many students by annotating it. It becomes a lot of fun because many students are not able to understand. Students, ex-students, एंड रिटायर्ड ऑर्गेनाइजर्स सबको मैं एक एनोटेट करने के बाद भेज देता हूँ. आप मौका है तभी पढ़ लीजिएगा. सो द चेस लवर समटाइम्स कम्स बैक टू मी आफ्टर 2 or 3 months. अरे हमने आज ही देखा, हमें टाइम नहीं था बोर्ड पे देखने का, आज ही देखा और बहुत मजा आया गेम देख के. सो दैट सॉर्ट ऑफ, आई थिंक दैट फीलिंग आई रियली एंजॉय. इट्स जस्ट लाइक making other chess players happy, and even non-chess players get to know about some player, get to know about the personality of a player sometimes, because they ask questions about Vishwanathan Anand or other players as well, which are very interesting. Like the incident with Anand was sort of called Lightning Kid by BBC in 1985. I was there watching that. So BBC arriving and interviewing him and then publishing it for half an hour. So it was all that live. I still remember those moments. And it's much different now because people won't be able to get back to those moments. 1985 is a long way back. But I live those moments and that cherish those moments. And if what is happening today, also I cherish. I would see a game. I'm going to remember it after 3 or 4 years. So I enjoy every part of it. And that's how it is. Whether you write an article, whether you read an article, whether you see a game or play a game. Play a game now is very difficult to play a good game now for me. But still I enjoy. And that's very important that even non-chess players, some other sports persons ask me about chess, like about not only Anand, but about chess, about a chess game. So that's very important. I think it's very interesting to know. Okay, so like from chess grandmaster to chess sports journalist, I should tag you now, right? So, I mean, But it is I'm all doing a lot of coaching. So I'm doing a lot of coaching. So I'm a chairman okay. of Asian Chess Federation and also the Yeah. All India Chess Federation Trainers Commission. So our main job is now to create trainers. Last year we created 150 trainers under the Sports Authority of India initiative. So basically, it's not a creation as such because the paper comes from the International Federation. The paper setters are different, examiners are different. We only train them for 3 days. But it's sponsored by SAI. And we're happy that all 150 got through. Because if half had failed, then probably our coaching ability could have been questioned, and we ourselves could have questioned. But luckily, all of them got the international diploma, so international degree. So last year, 150. This year, we are going to have 120 new people who are qualified chess trainers. Because very often good players, they do not know how to teach. And that's Yeah. a different aspect. Since we have been studying the journey of other players, it becomes very easy to teach how to look at a student subjectively and how to express this. 3 days of a short time. But I think mainly we are doing the chess training program, training the trainers, training the players, as well as journalism is, of course, a hobby. जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बेसिकली हम कहेंगे, जो वक्त जो एक एरा था आपका 84 85, ये जो एक 80s का एरा था और आज का जो एरा है, क्या आप फर्क देखते हैं दोनों में? नहीं, एक मुझे लगता है कि तभी बहुत अच्छा था. इन द प्रिंट मीडिया वाज वेरी गुड इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव देते थे और इट वाज नॉट नेसेसरली टेक्निकल. लेकिन जैसे चीफ मिनिस्टर आ गए या कहीं वन ऑफ द टूर्नामेंट्स व्हिच वाज कंडक्टेड इन एशियन, जो जहाँ पे मुझे आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ गोल्ड मेडल इन द एशियन टीम चैंपियनशिप इंडिविजुअल वेयर आई डिफीटेड द चाइनीज प्लेयर. तो वहाँ पे बलराम जाखर जी तभी लोकसभा स्पीकर थे, वो खुद आए थे. तो वो सारा प्रेस में आ गया, उनके फोटोज वगैरह आ गए थे और जाखर जी आए, जाखर जी ने गेम खेले और वो ही रीजनेबली गुड प्लेयर एज वेल, सो यूनिवर्सिटी चैंपियन. तो ये सारे जो रहते थे फोटोज, लोकसभा स्पीकर खुद प्लेयर से मुलाकात कर रहे हैं, इंडियन प्लेयर से,
and then our meeting with the Prime Minister then at Prime Minister's bungalow. So that also was published. So there are a lot of human touch to that more than I would say technical angle. लाइक क्या चाल चली है प्रवीण ने या आनंद ने, इससे भी ज्यादा एक थोड़ा सा ह्यूमन एंगल तभी रहता था. एंड दे यूज्ड टू गिव कॉलम्स, बिग कॉलम्स, समटाइम्स half a page. Indian Express particularly, I remember they've given half page to important tournaments like World Championship and other tournaments. वो थोड़ा सा अब कम हो गया because every in one of the reasons is in those chess was the first game where India was excelling, apart from a few games of course. तो जी अभी क्या हो गया, we have got top players in almost all sports. I must say that chess is not unique. We have got top players, but we have got better players even in the other sports, badminton and of course and now we are seeing athletics, javelin throw of course. So ये होने के बाद they also have restricted space, you know. तो स्पोर्ट्स पेज का जो है लिमिटेशन ज्यादा आ गई. इफ वी डिड वेल इन दोज डेज दे फेल्ट ओके नोबडी एल्स इज डूइंग वेल, सो दिस स्पोर्ट डिजर्व्स हाफ अ पेज. आज वो नहीं होगा, एवरीबॉडी इज डूइंग वेल समवेयर एल्स एंड एज अ रिजल्ट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट. तो थोड़ा सा ह्यूमन टच चला गया है. एंड थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई थिंक they want to make it more exciting from the appearance point of view rather than the content from my point of view. वो कभी कभी हो जाता है, तो वो थोड़ा सा क्योंकि दैट नेसेसरी, इट शुड नॉट बी मोनोटोनस एंड बोरिंग. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स या मीडिया नहीं, बट एक ह्यूमन एंगल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अच्छा टच करता है, वो प्रिंट मीडिया आज नहीं कर पाती है. बट इट दे यूज्ड टू डू इट अर्लियर. Yeah, and that's why that archive photo of yours is still the DP of your WhatsApp, right? Yes, Receiving the the Arjun Arjun Award Award, I from think, Gary yes, Arjun Delson. Award when Jail Singh ji said, and Yeah, I must remember, you know, like Jani Jail Singh ji, one may not know because that's the only memory I had, because when I left and after the I got the award and then he just came and addressed to us. He said, आप सब लोग अभी चैंपियन हैं, आपने इंटरनेशनल पदक जीते हैं, लेकिन आप जब great. रिटायर हो गए तो आप आपके जैसे 10 चैंपियन कम से कम बनाएंगे. ये बहुत जरूर अच्छी क्या बात. बात. तभी हमने सोचा था कि हम कहाँ सिखाएंगे, लेकिन after 20-30 years from getting the prize, I realized that how sort of what a great visionary he must have been. Of course, he was president of the country. So then I'm happy that I've got more than 5 grandmaster students now, and my wife herself got Arjun Award and Padma Shri. Yeah, yeah. So it was to make a trainer. That was the motivation. Jail Singh's words were motivation, because at that time we never thought of coaching. So I still keep that DP because that's one of the that's the day where I learned a very big lesson in my life. ग्रेट. सो जैसे कि अभी आपने अपने वाइफ को मेंशन किया, भाग्यश्री मैम को मेंशन किया है, तो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे हम उस पर. थोड़ा बताइए आप कैसे मिलना हुआ और ऐसे काउंटर पार्ट्स मिल गए, आपस में भी चेस खेलने वाले मिल गए लोग. एक्चुअली भाग्यश्री इज नॉट फ्रॉम मुंबई. मैं मुंबई से ही हूँ और भाग्यश्री सांगली से थी. बट शी गॉट इनटू द इंडियन टीम. तो जैसे इंडियन टीम में आ गई तो हमारी थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई. इन दोज डेज ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सच अ आई मीन द एटमॉस्फेयर वाज नॉट वेरी फ्रेंडली. इट वाज कंजर्वेटिव. शी केम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस आल्सो. तो थोड़ा सा ऐसे बातचीत होने लगी. फिर देखा तो उनके गेम में काफी प्रतिभा थी. तो व्हाट आई फाउंड शी वाज वेरी टैलेंटेड एंड एज हर रिजल्ट्स इवेंचुअली डिड, देन शी वाज सो पैशनेट अबाउट द गेम एंड हर फैमिली, द साथी फैमिली, दे रियली सपोर्टेड हर. तो वो आके अपने मतलब अपने जो भाई है यहाँ पे आके रहने लगी, जस्ट टू मेक श्योर दैट सांगली में चेस कोचिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, अच्छे प्लेयर्स को खेलने का मौका नहीं होगा. तो घर वालों ने सोचा कि कहीं बॉम्बे में भेज दे तो कहीं कोचिंग हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड शी वाज स्टेइंग विद हर ब्रदर in Bandra, which is very close, from about 1.5 kilometers from our home. That's how we got to know each other better and better, and then we became very good friends till, of course, I proposed to her, and so And I can see that blushing, is still on your face, remains intact. so that was a great moment, I think, because she was very passionate and she continues. She even plays tournaments, and last year she won the Commonwealth for men and women combined senior championship. She won the gold. So above 60, she was competing against the men and she became the gold medalist. So she's keeping that, and that's one of the reasons why we both stick to this, because we have not lost the fire in that. We have the passion, and हमको कभी भी मौका मिलता है तो we exchange the games, and I set difficult puzzles for her so that she will need a lot of time to solve it. So make it difficult. तो थोड़ा सा वो अभी भी chess romance is also there, and because of chess romance, life का भी romance है. ग्रेट. सो ये कनेक्शन जो चेस वाला है वो और ज्यादा आपके रिलेशन को स्ट्रांग करता है. वैसे Yes, काफी डीप लेजेंडरी बनाता है, बिल्कुल पर्सनालिटीज है. बिल्कुल डीप बनाता है.
जी। एग्जैक्टली तो काफी लेजेंडरी पर्सनालिटीज हैं आपके घर में। आपके जो भाई हैं वो अभय थिपसे जी, वो खुद भी एक फॉर्मर जज रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। आपकी वाइफ एक विमेन इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं। आप खुद एक चेस ग्रैंड मास्टर रहे हैं। तो जब आई मीन बीइंग अ चेस प्लेयर, कुछ ऐसा हमेशा दिमाग चलता रहता है कि मतलब हमेशा कि आप जज कर पाते होंगे ना सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। Yes, yes, quite often. In fact, I must say, my younger brother was the first one from our family to win a national championship. He became national sub-junior champion the year I became national junior champion. So 2 months before me, he became. So he is also. So we studied together. We generally talked to each other together. और it was very common for us. अरे ये ऐसा करता है. दूसरे प्लेयर के बारे में, if somebody has beaten me or I have beaten somebody and my brothers are playing against them, अरे वो ऐसा करता है, उसको ये आदत है. So we started really studying the human beings, and that's one of the important reasons, as my brother also says, Abhay also says, that it helped him in looking at the case in a proper way in judiciary. क्योंकि हम जज करते हैं सामने वाले को not only by the moves but also by the expressions. अगर चेहरे पे डर है तो चलो हमको अटैक करना है, चेहरे पे डर नहीं है तो हमें डरना है. So these are the things we learn to study, and we also learn to hide those things. नहीं तो सामने वाला भी ओह, देखेगा. So these are the things we must concentrate. But I think chess is, it's impossible to play chess without a study of human nature, and that's more exciting. I must say, chess से अगर ज्यादा exciting कोई चीज होगी तो exploring human nature is, I think, one of my hobbies. It's one of the most एग्जैक्टली तो मैं अगर ये कहूँ enjoyable कि things. आप चेस प्लेयर के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी है तो गलत नहीं होगा शायद। तो फिर आप जज कर सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट मेरे तो नहीं दिमाग में क्या कहेंगे, चल रहा साइकोलॉजिस्ट है। तो नहीं, हम अपने चेस के लिए ट्रीटमेंट. लेकिन yes, sometimes the students, they are depressed and they do badly. And yesterday there's a case when a boy had lost both the games and he had difficult task. And then I sent a voice note to him because he was playing and before the game, and he, because of that, he, I don't know because of that, but he showed a good result yesterday. So मतलब मुझे अच्छा लगा कि 2 गेम हारा हुआ है, एकदम डिप्रेस्ड है. तो आफ्टर द दैट वॉइस नोट, ही प्लेड अ वेरी ब्रिलियंट गेम. कल की शाम ही ये तो हुआ था. So it's also very important that how we look at the child, because I know him since childhood. Now he's probably 17 or 16. तो ये फर्क बहुत हो जाता है कि इसको बच्चों को हम जानते हैं बचपन से, इसके लिए क्या ठीक होगा. शायद माता जितनी अच्छे जानते हैं वैसे कोच भी जानता है. माता जी को जनता मालूम होता है, तो वैसे ही कोच हम्म, को भी पता चल जाता है. जी बिल्कुल। इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आप फ्यूचर कैसा देखते हैं चेस का, और उसके साथ इनकलकेट करेंगे हम ब्लाइंड चेस को भी, कि इतने सारे प्लेयर्स उभर कर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दर्पण ईरानी है, आर्यन जोशी है, संस्कृति मोरे हैं, एंड देन देयर आर मेनी प्लेयर्स, सौंदर्य कुमार प्रधान है। तो आपका क्या टेक है डिसेबल चेस पर? यस, आई थिंक वंडरफुल. क्योंकि एक इंडिया में जब से चेस की बूम आई है तभी ये ब्लाइंड चेस, ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशिएटिव्स बाय फीडे, बिकॉज फीडे ने पहले ही ब्लाइंड टीम्स को सिखाना शुरू किया. एंड इंडिया में यू मस्ट हैव सीन, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द associations and the federation in the 80s and 90s, now we see that so many strong players who are, I mean, in the world blind championship, they're always, India has always been winning the gold for last several years, and many of them have become world champions. And one of the most important thing is they have trainers who are not necessarily blind. Of course, they have got the common trainers and they got sponsorship to get the training. तो इनका जो रहता है कि इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. सी, जो आदमी, अगर हम दुनिया को देख नहीं पाते हैं तो हमारी थिंकिंग भी लिमिटेड हो सकती है. एंड नीड टू ऑब्जर्व एंड एक्सप्रेस, एंड ये उनकी पूरी हो जाती है. आप अगर खेलते समय उनको देखोगे तो इतने खुश रहते हैं व्हेन दे आर प्लेइंग द गेम. अब इतने खुश रहते हैं, दे आर इवन इन द डिफिकल्ट पोजिशन. अगर हार भी गए तो दे आर ऑलवेज कम आउट विद सॉर्ट ऑफ थॉटफुल कि क्या करना चाहिए था, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर गेम. तो उनका ये जो रहता है कि क्रिएटिविटी उनको जो मिल जाती है, वो सेटिस्फेक्शन है. हारने के बाद हमें जितना दुख होता है उससे कम दुख उनको होता है, क्योंकि दे हैव रियली प्लेड अ गुड गेम एंड दे हैव एंजॉयड. तो उनके लिए एक लाइफ बहुत ही अच्छा जर्नी हो जाता है बाय प्लेइंग चेस एंड टूर्नामेंट चेस. तो मुझे लगता है कि फॉर पर्टिकुलरली दोज हु हैव सम डिफिकल्टीज इन लाइफ, उनके लिए तो sport is going to do really well. Not only chess, but I met Mansi Joshi ji also, and या Sumit until, and so these people are so positive and so enjoying their life because of this passion, I must say. And even the chess sports organizers, I must say, Arvind Prabhuji, picket ball president,
He is not a cricket ball player himself, but he enjoys so much being in this because he's in the also has some health issues. So no, it is I think a sport in general and particularly chess gives a lot of pleasure to a person other than what routine things like हम जो बाकी जो सोचते हैं कि चलो यहाँ घूमेंगे फिरेंगे ये करेंगे that's a normal thing that how long will you do that एक आध बार करते हैं हम दिन में 7 बार तो ये नहीं कर सकते तो we need some recreation something that will appeal to the brain Right. intellectual activity and जैसे किसी की विजन का या कोई लिमिटेशन आ जाती है दूर जाने की कहीं की तो they have limited scope of exposure and with this exposure helps them become complete human beings and that's I think more important for them as well and that's the reason why they excel because they are successful because of this exposure they're happier and because they're happier they're successful so ये थोड़ा सा एक reflect हो जाता है so it's very nice to see the players who have playing under special faculty in fact I played again once against world handicap champion and I defeated him but I felt Sergei Salov was the name from Russia. So I felt a bit bad because he had come from Russia to play an open tournament. But I was playing a normal tournament, so I had to beat him. I mean, it was a very tough game. And after that, he had someone who could explain, and he talked to me through someone for almost half an hour, not only about chess, but about life and what he was doing. So he also found a way of expressing himself to a foreigner. Probably it's the first time he Right. was playing a foreigner. So ये भी सारी चीजें होती है कि उनको भी एक्सपोजर मिल जाता है and particularly, I think our players are doing so well in all special categories, not only chess, but everywhere that we are going to win a lot of medals. And that is because we treat them in a proper spirit. We do not think of them as liabilities, we think of them as friends. And what this friend can do Exactly. for me and what I can do from them. That are the things the society takes. And that also reflects, I think, the spirit of the society reflects in the performance and the pleasure they derive basically from the game.